Assalamu alaikum class 6. As you all know, we are on unit number 6 and today we will read page number 52. So let's quickly open your book, page number 52. Today we will read about what is the difference between primary forest and planted forest. Primary forest वो होते हैं बेटे जो नेचुरली ग्रो करते हैं, एंड प्लांटेड फॉरेस्ट ऐसे हैं जिनको ह्यूमंस फॉर सम पर्पस जो हैं वो प्लांट करते हैं. Some forests have grown naturally. Their trees dropped seeds that grew into more trees. The forests have been changed very little by humans. These are called primary forest. कुछ फॉरेस्ट हमारे पास नेचुरली ग्रो करते हैं. जब उनके सीड ड्रॉप होते हैं तो वो जो जब गिरते हैं अर्थ पे तो वो एक न्यू ट्रीज़ बना देते हैं. ठीक है, ये जो ट्रीज़ इस तरीके से बनते हैं, जो फॉरेस्ट इस तरीके से बनते हैं, उनको कहते हैं बेटे प्राइमरी फॉरेस्ट. देयर आर ऑल्सो फॉरेस्ट दैट आर प्लांटेड. Some forests are 100% planted or seeded. Other are mixture of primary forest or planted trees. हमारे पास कुछ फॉरेस्ट 100% प्लांटेड भी होते हैं और सीडेड भी होते हैं. कुछ होते हैं कि जो प्राइमरी फॉरेस्ट और प्लांटेड ट्रीज़ का मिक्सचर होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ वाई डू पीपल प्लांट फॉरेस्ट. लोग फॉरेस्ट को क्यों प्लांट करते हैं. पीपल प्लांट फॉरेस्ट फॉर फोर मेन रीजन्स. 4 रीजन्स हैं जिनके लिए प्लांट्स को फॉरेस्ट को प्लांट किया जाता है. द फर्स्ट वन इज़ टू ऑब्टेन वुड और अदर मटीरियल्स फ्रॉम ट्रीज. सेकेंड वन इज़ टू प्रोटेक्ट हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. थर्ड वन इज़ टू प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन. फोर्थ वन इज़ टू हेल्प टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज. हैबिटेट्स प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वुड को ऑब्टेन करने के लिए, उसके बाद आपकी लैंड को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन. एंड फोर्थ वन इज़ कि क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए. Different kinds of forests are planted across the world for various purposes. For example, pine trees are planted for timber in Newlands Forest, Cape Town, South Africa. Similarly, hardwood trees are planted for forest habitat in North Wales, UK. The shelter belt forest planted on Senijing Plain, northeast China, protects farmland from dust storms from the Gobi Desert. Next is urban planted forest. An urban forest is a forest or a woodland in a town or a city. जब आपके पास किसी भी सिटी या टाउन में कोई फॉरेस्ट है तो उसको अर्बन प्लांटेड फॉरेस्ट कहते हैं. Many towns and cities around the world are planting trees to improve their environment in many ways. Some ways are they give shelter for animals and provide pleasant recreational spaces for people. Second one is they provide shade from sunlight. Third one is they reduce pollution. Fourth one is they shelter buildings from winds. Fifth one is they take up excess water that could cause flooding. So these are the reasons to plant an urban forest. Next is how do forests help a city. एक जो फॉरेस्ट है वो एक सिटी की हेल्प कैसे करता है. इफ़ यू हैव बीन टू अ फॉरेस्ट और एन एग्रीकल्चर एरिया यू विल नो हाउ कूल एंड फ्रेश द एयर देयर फील्स. कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज़ सो. क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी विलेज के जो एरियाज़ हैं और आपके जो फॉरेस्ट के एरियाज़ हैं उनकी एयर इतनी कूल और पीसफुल की होती है. बिकॉज प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमें पता बेटे प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं ऑक्सीजन एंड वाटर विच क्लीन्स द एयर. और ये दोनों ऑक्सीजन एंड वाटर रिस्पॉन्सिबल हैं एयर को क्लीन करने के लिए. However, in a city, a lot of heat is produced by the moving vehicles, air conditioning units, and industrial processes, which make the atmosphere of a city polluted and warm. City में आपके पास बहुत सारी reasons हैं, जैसे moving vehicles हैं, air conditioning units हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जो आपके एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड बना सकते हैं. प्लांटिंग फॉरेस्ट अराउंड अ सिटी कैन हेल्प कंट्रोल इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड इम्प्रूव इट्स एटमॉस्फेयर नेचुरली. सो इट्स एडवांटेज ऑफ प्लांटिंग अ फॉरेस्ट दैट यू कैन कंट्रोल द environmental pollution, and second is to improve the atmosphere. Look at the diagram below. Do you know that hot air rises while cool air sinks. But it's the concept of your general science that कि जितनी जो hot air होती है वो आपके एटमॉस्फेयर में राइज कर जाती है और जो cool air होती है वो सिंक कर जाती है. The cool air surrounding the forest and agriculture area sink towards the ground. Also the upper atmosphere of the earth is cooler than the lower atmosphere. When the hot air
in a city rises, it goes up into the upper atmosphere and cools slightly. As it cools, it begins to sink and gets cooler as it gets close to the air above the forest and continues to sink down. जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, this creates lower air pressure in the city. Thus, cool air from the forest flows towards the city. Due to this air cycle, the atmosphere of the city is improved and pollution is reduced. Let's see this air cycle in a diagrammatic way. First पे देखिए आप बेटे, heat radiates from building, cars and roads, increases air temperature in the city, causing the hot air to rise above the city. जो आपके hot airs हैं फिर above the city move कर जाती हैं. Second, hot air spreads out and cools slightly and it falls cools more. जैसे ही आपके पास hot air falls करती है तो वो और cool हो जाती है. Cool air is drawn into the city due to the decreasing air pressure caused by the rising hot air. तो air pressure जो कि cause होता है, less air pressure जो कि cause होता है rising air की वजह से, उसकी वजह से जो cool air वो दोबारा city की तरफ drawn होती है. इस तरह ये पूरा जो है cycle हमारे पास run होता है और आपके पास जो आपके city का environment है, atmosphere है, वो less polluted भी होता है और जो है वो improve भी होता है. Dear students, now we are going to read some examples of the planted forest. First we will read an example of planted forest in Pakistan, and the forest name is Changamanga. One of the world's largest planted forest called Changamanga is near Lahore in Punjab. It was planted in 1866. कब प्लांट किया गया था बेटे इसको? 1866 में, पाकिस्तान बनने से भी पहले. During British rule to produce wood for building railways and to use as a fuel for the steam trains. The climate of this area is hot and dry. Climate क्या है Changamanga के एरिया का? hot and dry है. It has very hot summers from April to September and cool winters from mid-November to the end of the January. It has much lower rainfall than tropical rainforest, although it has heavy monsoon. The months of July and August. The forest is irrigated by canals during the dry season. During through canal system, नहरों के निज़ाम के ज़रिए dry season के दौरान जो है इस एरिया को वाटर प्रोवाइड किया जाता है. Changamanga forest used to cover 5,061 acres. Now it covers only 1,416 acres because of logging. About 200 acres of this forest are being replanted each year. The most common trees in forest is shisham and eucalyptus. In 2005, Wildlife Fund Pakistan opened a breeding center here for the Gyps vulture, which is a critically endangered species. Parts of Changamanga forest have been made into a recreation park. Visitors can take a 5-kilometer ride into the forest on a small train. There is also a pagoda, a water turbine, a waterfall, and a children's play area, a boating lake, and a picnic areas. They can visit the wildlife zoo, where the animals live in conditions as close as possible to their natural habitats. So it's an interesting point. Some animals in the zoo are bluebells, monkeys, urials, spotted deers, peacocks, partridges, and many others. Another example of a planted forest in the UK, Kildare Forest. Kildare Forest is in Northumberland, Northeast England. It was planted on moorland that had some small natural woods. The Forestry Commission of the United Kingdom began to plant the trees in 1926 and now covers 650 km², the largest planted forest in the Western Europe. So यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is the largest where is the largest planted forest is located? कहाँ पे है? तो आपने कहना है कि it is located in the northeast of England and the name is Kildare Forest. The trees are mainly conifers. Plants like spruce, pine, and fir grow in this forest, along with some deciduous trees like birch, rowan, cherry, oak, beech, and willow. Kildare Forest was mainly planted for timber. किस लिए प्लांट किया गया था इसको? For timber. The forest is the habitat of many animals, including red squirrels, badgers, roe deer, otters, shrews, bats, and many woodland birds. It is also an important habitat for protected birds of prey, including ospreys. Ospreys एक हमारे पास endangered species है, तो इसके लिए भी एक habitat है Kildare Forest. Next बेटे, we are moving towards the exercise part C. हमारा last part है जो solve करने वाला है. First question is, make notes about the advantages and disadvantages of planting trees. In your notes, write your thoughts about the people who might be affected by a new forest. Second, use your notes to help you to write an argument for or against planting trees. आपको एक बड़ा समराइज़ करके आपको एक बड़ी अच्छी वर्डिंग में
नोट बनाना है अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लांटिंग फॉरेस्ट। जल्दी से सब बच्चे अपनी नोटबुक्स लें और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लांटिंग फॉरेस्ट पे बैठ के एक छोटा सा पैराग्राफ राइट करें। उसको बड़े अच्छे से राइट कर लेंगे, बट मेरी तरफ से कुछ सजेशंस हैं। फर्स्ट इज़ द इफेक्ट्स ऑन फार्मर्स। आप फार्मर पे इफेक्ट बता सकते हैं कि हु माइट लूज सम ऑफ देयर फार्म लैंड। सेकंड, पीपल इन नियर बाय विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़ हु कुड बेनिफिट फ्रॉम द रिडक्शन इन पोल्यूशन एंड फ्लडिंग एंड फ्रेशर कूलर एयर एंड एंजॉय विजिटिंग अ फॉरेस्ट फॉर रिक्रिएशन। तो थर्ड, लोकल बिजनेस हो सकता है हुज ट्रेड कुड बेनिफिट फ्रॉम विजिटर्स। तो इस तरह से आपको ये तीनों पॉइंट्स है सजेशन के तौर पे, आप इनको यूज़ करके एक पैराग्राफ लिखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, नेम सम एनिमल्स यू कुड सी एट छंगामांगा। आपको कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि आप छंगामांगा पे देख। एनिमल्स के नेम है जिप्स वल्चर, ब्लू बल, यूराइल, स्पॉटेड डियर, पीकॉक, पैट्रिज, वेरियस स्पीशीज़ ऑफ मंकी। सेकेंड, हाउ कैन विजिटर्स टू छंगामांगा स्पेंड देयर टाइम। जो छंगामांगा विजिटर्स जाएंगे वो अपना टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं वहाँ पे। They can go to the zoo, walk in the forest, ride on the train, visit the pagoda, water turbine or waterfall. They can also go to the children's play area on the boating lake and have a picnic. बेटे, it's a fun question for all of you. आप खुद लिखेंगे what would you choose to do at छंगामांगा and why। आप छंगामांगा पे जाके क्या करेंगे और क्यों करेंगे। Exercise part D, how do you think छंगामांगा affects the lives of the people who live nearby। करीब जो लोग रहते हैं छंगामांगा फॉरेस्ट ने कैसे उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट किया है। द फॉरेस्ट कुड हेल्प टू प्रिवेंट फ्लडिंग बिकॉज ट्रीज टेक अप अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल। इट could provide shelter from wind and hot sunshine. It provides a pleasant place for a day out. Third, it brings tourists to the area. This could provide income for local businesses. Last one is it could also make local roads and railway bus busier. And the last question is, write an information leaflet for visitors to the छंगामांगा फॉरेस्ट पार्क। आपने जो विजिटर्स छंगामांगा फॉरेस्ट पार्क को विजिट करेंगे आपने उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव सा लीफलेट जो है वो राइट करना है। तो आप इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम दिस यूनिट, फ्रॉम द लीफलेट्स फ्रॉम द छंगामांगा एंड फ्रॉम द इंटरनेट ऑल्सो। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज C3 is write the correct answer. The forest on Xinjiang plain in China was planted for, किस लिए प्लांट किया गया था। for timber, for protection from dust storms, for a habitat for animals, or for protection from floods, for the protection from the dust storms. So the correct answer is B. Next, question number 4, write true or false for each statement. Urban forest help to prevent flooding in towns. Is it true or false? Yes. Is it true? Urban forests are found in uninhabited places. So it will be wrong क्योंकि urban forest होता ही बेटे city और town में है। Cities are cooler than the surrounding countryside. Is it true or right? It is true or false? बेटे कंट्री साइड्स जो होती हैं वो कूल होती हैं एज़ कम्पेयर टू सिटीज़, बिकॉज सिटीज़ में व्हीकल्स होती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बहुत सारे और भी पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। दैट्स वाई जो हमारे पास सिटीज़ होती हैं वो वार्म होती हैं एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग कंट्री साइड। सो इट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।